to the audience, everyone. I'm the youngest group testing officer to have served in the history of the Indian Armed Forces since 1947. That's a bold statement, I know, but yes, this is a fact. Yeah, I was lying hibernated here and there, but now I have resurfaced. So let's start. So basically, क्या होता है SSB में? What is SSB? SSB is a test of your personality. We are trying to figure out whether you're ready for a life in the armed forces, in the Indian Armed Forces. Two-stage selection system hai. Stage 1, it has got two major tests: OIR test, Officer Intelligence and Rating Scale test, and Picture Perception and Description test, followed by the discussion as well. ये दो टेस्ट कंडक्ट होने के बाद में इन दोनों में आपका जो परफॉर्मेंस होता है उसके बेसिस पे बोर्ड ऑन द स्पॉट डिसाइड करता है. उसको ऑन द स्पॉट कॉन्फ्रेंस कहते हैं. जिन लोगों ने एसएसबी आज तक दी है, जो गए हैं स्टेज 1 तक एटलीस्ट, उन लोगों ने देखा होगा कि देयर आर 3 assessors sitting in front of you when this group discussion happens where they ask you to make a common story. तो वहां जो वो 3 assessors सामने बैठे हैं वो भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटीओ एंड साइकोलॉजिस्ट ही है, जो ऑन द स्पॉट कॉन्फ्रेंस करके डिसाइड करते हैं कि किसको स्टेज 2 में रखना है. स्टेज 2 में होता क्या है? So forgive me for this. It's day 1, day 2, day 3, and day 4, and day 5. It's not stage. It's day. Forgive me for this error on the PPT. The psych test is conducted, and that's on the day 2. And then we go to group tasks, which are group situational tasks, the 9 tasks. Lecture, it is a part of that. Forgive me for the error that's there on the screen. GD, GP, PGT, GOR, and then your half group task and lecture it. This happens on the day 3, and day 4 is about individual obstacles, command task, and the final group task. In between, the interviews also happen by the interviewing officer. Finally, on the 5th day, the board holds a board conference in which all 3 assessors who have been associated with your assessment at the SSB, they make up their mind for recommending you for a career in the Indian Armed Forces in the officer cadre. And that's how it works. Most of you guys already know this. It was just a recap. What's our motive today? See, guys, we've been doing these webinars a lot. While doing these kinds of webinars in the past with you guys, we've realized that there are a lot of other lingering issues that we need to address. And what are these issues? See, guys, I've realized this, that a lot of people get nervous during group discussions. There's a lot of difficulty in putting across your thoughts into words, and then you guys go blank when group discussions are conducted. Now, these group discussions are not only related to the GD as a task in the group testing battery, but also the group discussions that are conducted as a part of your PPDT, जिसमें common story बनाने के लिए बोलते हैं. Then group planning exercise में they ask you to come to a common conclusion. That what's the common conclusion? What's the common solution that the group wants, or rather the group aspires to form? So the whole point is ये जो नर्वसनेस किक इन करती है आप लोगों के अंदर जब भी ये ग्रुप वाली कोई भी एक्टिविटी होती है, that's something which pulls you down very strongly and takes you away from the recommendation. You guys make a lot of grammatical errors while framing sentences, whether it's spoken English or whether it is written English, in both the cases. ठीक है. Then थोड़ा सा लोग मेरे को पूछते रहते हैं कि सर what's the importance of physical fitness, physical routine, waking up early? So I always tell them that you have to hop, skip, run, and jump, which will eventually make you sweat and pick up one spot. This is very important. Armed Forces is all about troop games. Cricket is something that we do not really honor. Or rather, that's not our cup of tea. So any troop game, football, volleyball, hockey, whatever. And then there's a very weak hand on
the geopolitical issues or the current affairs, national and international in nature, तो इस पे आप लोगों का जो हाथ है ये थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि we come across people who do not have the habit of reading, whether it's reading newspapers or whether it's about reading uh, general awareness magazines such as, let's say, Reader's Digest or General Knowledge Refresher or Competition Success Review or Competition Refresher or GK Today for that matter, or India Today magazine, or let's say Frontline. ये सारी चीजों में मतलब these are your good to go magazines which you should cultivate a habit of reading almost on a daily basis, at least the editorial columns in the newspapers. तो यहाँ पे आप लोगों का हाथ थोड़ा सा कमजोर है, ऐसा हमें पता चला है. ठीक है. सो नोइंग अबाउट दी एसएसबी इज जस्ट नॉट इनफ. आई मीन बस खाली पता कर लिया, ओके फाइन, ये टास्क है, ये टेस्ट है, इसको ऐसे करना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है. एक्चुअली खाली इतना सा पता कर देने से ही आप लोगों का रिकमेंडेशन होगा, ऐसा नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द असेसमेंट इन द बैकग्राउंड हैपन्स. और ये जो ऊपर 4 पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इन इन पॉइंट्स में बैकग्राउंड में इसका इस्तेमाल कैसे होता है असेसमेंट करने में, that's more important for you guys to understand, so that your probability of getting recommended increases. Okay, so guys, stay tuned, we'll talk about this more at the end of this session. Let's go ahead. So whatever I'm showing on the screen is just a normal picture that you would get as a part of your stage 1 screening, because generally it has been an endeavor of the Defense Institute of Psychological Research to showcase pictures that are blur and not so clear as a part of their PPDT का test. आजकल वैसे ऐसा होता है कि clean and clear pictures भी दिखाते हैं. I've been a part of the picture development process as well while I was setting up SSB Kolkata. So I have learned it from the DIPR scientists as well. And also I hold a master's in psychology. So I can say this with conviction that whatever pictures that you see on Google, which is floating here and there on various social media handles, they tend to sway you away from how exactly the assessment is looked upon by the Services Selection Board. So let's say, इस पिक्चर की बात करते हैं. कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, आज का मेन मुद्दा, हाउ टू राइट गुड स्टोरीज. ठीक है. स्टोरी में your story is actually, it has to talk about the past, it has to talk about the present, and it has to talk about the future. Okay, so we say this as what led to the situation, what is happening now, and what is the most likely outcome, right? Transcribe this into a star format. Now, this is all about you. S stands for situation, task, action, and result. Okay. All of you guys can hear me, please? Can someone just check this? Emma, you're there on the call. Can you please check? You guys can hear me? Yes, you're audible to me. Guys, if you are able to hear it, please say yes in your chat boxes. Okay, guys. So ये थियोरी है, यही आपका मिर्च मसाला है कि सिचुएशन आपने डिफाइन करी है, पास्ट और प्रेजेंट. ये जो सिचुएशन आपको पिक्चर में दिखी, ये सिचुएशन कहाँ से ला करके कहाँ पे रुकी हुई है. अब फ्यूचर में जाने के लिए उस सिचुएशन में टास्क आपने डिफाइन किया, एक्शंस आपके हैं, जो रिजल्ट आपको चाहिए, व्हिच इज प्रैक्टिकल एंड रैशनल इन नेचर. ठीक है. So if you're doing this, automatically you're away from wishful thinking. ये नहीं चाहिए. Absolutely practical and rational, to the point,
on bull's eye. क्योंकि जो psychological assessment है behind this theory of projection, it's all about how you are projecting yourself into that particular situation. So it has to talk about you. If anything that we find, anyway, eventually we're going to find through the course of your stay, 5 days, and so many tests and the tasks, we're going to figure out who the hell you are. Your आपका जो रियल सेल्फ है ये तो बाहर निकल के आएगा ही. तो जो आपने बिल्ड किया है स्टोरीज में, ये अगर आपके रियल सेल्फ से मैच नहीं करता, उतना उसके अंदर लाइंग इंडेक्स है. दैट मीन्स you're faking something which is not real you. If it is not real you, अगर ये नहीं है तो ऐसा पर्सन तो वैसे भी हमें आर्म फोर्सेस में नहीं चाहिए. सो यू हैव टू स्टार्ट बीइंग यू. इसी को नटशेल में बोलते हैं बी यू व्हेन यू गो टू दी एसएसबी. छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इंस्ट्रक्शंस पे कोई ध्यान नहीं देता. आई एम वेरी वरीड अबाउट द काइंड ऑफ kachra or the muck, sorry for my language, but yes, I'll be very upfront about it, which is floating on the internet, which is actually taking you away from what exactly SSB wants. वो तो आप नहीं कर रहे हो, but because of so much of kachra that is floating around here and there on the internet, you guys are being misguided. तो बात कर लेते हैं इस पिक्चर की. क्या हो सकता है इस पिक्चर में? What can be the situation? स्टार कैसे बिल्ड हो सकता है इस पिक्चर में? Let's say for example, I would say this is a research team who's doing a research on, let's say, climate change on North Pole. अगर ये पसंद नहीं आया तो साउथ पोल कर देते, एंटार्क्टिका कर देते. अब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं. मैत्री मैत्री इज अ रिसर्च स्टेशन इंडिया का एट एंटार्क्टिका. अब ये रिसर्च टीम कहाँ की है? आईआईएम बैंगलोर की है, आईआईटी बॉम्बे की है. चलो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पकड़ते हैं, स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ अर्थ एंड साइंसेस, राइट. अब एग्जैक्टली बताते हैं रिसर्च टीम में कौन कौन है. रिसर्च टीम में एक प्रोफेसर है. उस प्रोफेसर का नाम प्रोफेसर निखिल कुमार चंद्रकला है. ओके. एंड ही हैज गॉट 4 postdocs who want to study rate of, let's say, rate of glacier melting and how the sea levels are going to rise up. इसके ऊपर they are doing predictive artificial intelligence. Okay, so they are building models. Okay, so this guy holds a PhD or a postdoc in, let's say, environment and sciences. Okay, Master of Science in Environment and Sciences. और ये इसके स्कॉलर्स है. इन्हें ये रिपोर्ट, ये सिचुएशन है, टास्क है, वहां लोग गए, रिसर्च किया. अब वो रिसर्च में एग्जैक्टली क्या किया, क्या एक्शंस लिए, ये सब लिखने के लिए आप लोगों को नॉलेज चाहिए. पढ़ोगे लिखोगे नहीं, हाउ विल यू राइट दिस स्टार? कैसे बिल्ड करोगे? और ये सारी चीजें आपकी रोजमर्रा की लाइफ में आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है. रीजनिंग एबिलिटी बोलते हैं इसको. हाउ वेल कैन यू रीजन योर सेल्फ, एंड दैट्स फैक्टर 1 का second officer-like quality, the most important officer-like quality, which is gonna decide whether you're on the right path, right beeline. I'm sure 99 participants are there, apart from the organizing team. How many of you guys understand what is beeline? BEELINE. Beeline. When an aircraft takes off, scramble, 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 beeline so and so. You must have heard this as a part of the movies also. Let's say Top Gun, for that matter. छोटी छोटी चीजें हमारे इर्द गिर्द है, लेकिन आपका अटेंशन वहां पे गया नहीं है, या फिर आपने पढ़ा नहीं है. अटेंशन स्पैन, कॉग्निटिव डिसोनेंस पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा है. इसीलिए रेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ at the SSBs is 3.7%, still considered the toughest interview.
Why? Because I want to give you, I want to, I'm giving out a job which is gonna be directly related to business of blood. खून खराबा करना है. तो खून खराबे के business में, if I have to empower you guys, I need to be 1000% sure whether you are deserving that thing or not, whether you're trainable for that thing or not. So coming back to the story, अब ये सब तो लिख दिया. रिजल्ट ये था कि COP 30 में they want to present this paper for manufacturing industries and cement industries because they are the major polluters या फिर इनके वजह से सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है. तो they want to come to some kind of a sustainable manufacturing practices or climate responsive architecture, which is being taught at, let's say, Himalayan Institute of Alternatives, set up by Mr. Sonam Wangchuk. Climate responsive architecture. ऐसे स्टोरी बिल्ड करना होता है. This is what we want in today's Indian Armed Forces aspirants for tomorrow's Indian Armed Forces, which is going to be so tech savvy. This is what we want in you guys. ठीक है, इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ. I mean, ये थोड़ा सा चेंज कर देंगे. It can be a mountain hike, it can be storm, it can be an avalanche, but then you need to know exactly what is the situation that you want to define, what are the tasks that you're going to define, what actions you will take if that situation starts moving live, for results that are defined by you, which are not wishful, but they're absolutely practical and rational in nature. थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट कर देते हैं. लेट्स से अभी ये टैट का पिक्चर है. कॉन्सेप्ट वही रहेगा. सिचुएशन है, टास्क है, एक्शन है, रिजल्ट है. ठीक है, यहाँ पे एक बंदा इंस्ट्रक्टर है और ये बच्चे स्टूडेंट्स हैं. जाहिर सी बात है कि अगर 10+2 की कोई SSB लिख रहा है तो वो अपने आप को अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट करेगा तो ही इज गोना प्रोजेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू अ स्टूडेंट, somebody who is a grad with some amount of experience. Let's say JAG entry वाला कोई है 30, 26, 25 year old, or let's say technical graduate course 26-year-old. There's a possibility that a graduate can still assume this role when he's projecting himself or herself on this particular picture. किस चीज की क्लास है ये? क्या पढ़ाना चाहते हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, SSB, या फिर लेट्स से सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिस्क पढ़ाना चाहते हो? फाइनेंस 101 पढ़ाना चाहते हो? कहाँ चल रही है ये क्लास? प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल पढ़ाना चाहते हो? अच्छा ये नहीं तो लेट्स से सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पढ़ाना चाहते हो? अच्छा ये भी बोरिंग लग रहा है तो लेट्स से एम्बेडेड सिस्टम्स डिजाइन इंजीनियरिंग. डिजाइन इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहते हो? मेरे PIQ फॉर्म में लिखा है मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. ओके फाइन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स की क्लास चल रही है. ठीक है, एंड दे आर आस्किंग यू टू डिजाइन अ सिस्टम फॉर F0 greater than or equal to 1000 millihertz. What is this F0? सुना है कभी? Fundamental frequency, mechanics of solids. I'm an engineer, I understand this. If you guys are engineers, you should understand this. Otherwise, what's the use of that engineering degree? Sir, what's the relevance of engineering knowledge in front of the interviewing officer? अगर वो नहीं पता तो जो फौज में इतने सारे सिस्टम्स के साथ आपको इंटरेक्ट करना है, उसके लिए आपको पढ़ाऊंगा फौजी स्कूल्स में. आई एम गोना इन्वेस्ट टाइम, एनर्जी, एफर्ट एंड रिसोर्सेस. अगर वो ट्रेनिंग अगर आप ग्रास्प नहीं कर सकते तो फिर आपको क्यों लेना है फौज में? Your past behavior in similar situations is your best predictor of what you're going to do in future. Behavior consistency principle बोलते हैं, इसके ऊपर assessment होता है. So these things are all indicative of how you build the stories. ये data points है. डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो रही है. ऐसा नहीं है कि हाँ ये पसंद आ गया तो इसको ले लो, ये पसंद नहीं आया तो उसको मत ले लो. ऐसा नहीं होता. या फिर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई ब्रैट है या फिर फौजी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ब्लू ब्लड, दैट कॉन्सेप्ट इज गॉन. वो सब काम नहीं करता. आई एम द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, द फर्स्ट वन इन माई क्लैन, और रादर द फर्स्ट वन सिंस 1947 टू हैव सर्व्ड इन द इंडियन नेवी इन द ऑफिसर कैडर फ्रॉम यवतमाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. और मेरे घर से तो किसी का कोई लेना देना भी नहीं था फौज में. एंड आई एम ऑल इंडिया रैंक 1 बाय द वे इन द SSB 14 SSB इलाहाबाद एंड NSB कोयम्बतूर.
or Navy. Both places, all India rank 1. तो देन उसके बाद एक्शंस क्या डिफाइन करोगे, रिजल्ट क्या, किस चीज की क्लास है, क्या पढ़ा रहे थे, और उसके बाद में डाउट्स क्लियर हो गए, बहुत अच्छा हो गया, हाँ डाउट्स क्लियर हो गए. या फिर ये क्लास है जिसमें सम इंस्ट्रक्टर इनटू जूनियर रिसर्च फेलोशिप के फेलोज एट लेट्स से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजीज IIST Trivandrum, और लेट्स से VR राव सैटेलाइट सेंटर बैंगलोर. पेलोड की बात हो रही है, or let's say fuel that they want as a part of their next Merlin engines that they try to understand what SpaceX did as a part of their re-entry vehicle program. ऐसी स्टोरी बनाओ, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना. दो चीजें हो सकती है, एक तो स्टोरीज तुम्हारे PIQ फॉर्म से, तुम्हारे क्वालिफिकेशन सेट से, तुमने पिछले 16.5 से 27 साल, दैट्स योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तुमने अपने जीवन में किया क्या है, उसके साथ चीजें रिलेट हो सकती है, क्योंकि ये तुम्हें आता है. तो इट्स गोना बी एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल एंड रैशनल. कितना आता है ये हमें देखना है, कितना कमांड है उस चीज के ऊपर, और कितना प्रैक्टिकल और कितना रैशनल है. उसके बाद एक्शंस क्या डिफाइन करोगे, उसके बाद रिजल्ट क्या बाहर निकल के लेकर के आओगे कि हाँ यार ये क्लास में मैं बैठा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, फाइनेंस पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, या कुछ तो पढ़ा, स्पेस साइंस पढ़ा, इसका रिजल्ट ये था. पढ़ने के बाद में टीचर ने ये पढ़ाया, उसके बाद मैंने ये किया, या तो फिर मैंने बच्चों को ये पढ़ाया और उससे क्या हुआ, whichever role that you're assuming. So your stories are in the star format: situation, task, action, result, which is defined by you. It has to talk about you as a person. Okay, guys, let's take a few questions now, Hema. Guys, if you have any questions, please you can put your I think questions we now, have and I'll a, start taking them. Sorry. I think we have somebody who says Yeah, no avalanche went down. So your story is next level. Who's this guy? Anonymous attendee. I I have think his name is Gaurav. Anonymous attendee, please confirm your name. You always come into the webinar as anonymous attendee. We want to know your name. Uh, मतलब शर्म की क्या बात है भैया, अगर ऐसे डर के बैठोगे तो क्या है, यहाँ पे इतने सारे लोग अपना नाम लेकर के बैठे हैं: प्रशांत, कोटी, अभिरूप सिंह, विपुल, मयंक, प्रियंका, LUHACH, I don't know how to pronounce that, I don't want to do the mistake, प्रमोद, प्रशांत. किस बात का डर है भाई लोगों को, पता नहीं. SSB के लिए आए हो. Okay guys, if you guys don't have any Abhay, further questions. Abhay has one question. He's typing. Let him type. Till the time I'll take Vipul's question. It's not a question. He's just written that I have filled the form for TGC 139 core. Course, yeah, technical graduate course 139 IMA, direct entry. There is one more question from Sachin asking, how can we write such stories when background is from a village? भैया मैं भी विलेज से ही बिलोंग करता हूँ यार, पढ़ता लिखता था मैं. एक अखबार पढ़ने के लिए एक दिन वेट करना पड़ता था यार, 80s में, 88, 90s, 94, 93, 96. एक दिन का वेट करना पड़ता था. नागपुर से महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल के बस में हितवाद का न्यूज़पेपर डालते थे वो लोग, शाम को आता था, अगले दिन पढ़ना पड़ता था लाइन में लग के टाउन हॉल में. घर तक तो आता भी नहीं था. इट वॉज अ कमोडिटी दैट यू कुड नॉट अफोर्ड, or rather it was something that was like, today's gold, or I don't know, platinum for that matter. I पढ़ने want, there. sorry. It's all about studying and having that thing you have fingertips पे यार. यहाँ पे चैट GPT है इसके अंदर, फोन में. स्मार्टफोन है ना तुम्हारे पास में जिसको यूज कर रहे हो, क्या लगता है आपको प्ले स्टोर पे फ्री एप्स अवेलेबल नहीं है? चैट GPT है इसके अंदर, पूरी दुनिया सॉल्व करके दे सकता है वो तुमको. So I don't understand the background is of language, is of village or what. It's the अंदर की चाह, interest, attention and grasping power, and healthy curiosity resulting in an urge to increase one's general awareness or what's happening in and around you in the world. ये definition है author like quality में. Receptivity, inquiring attitude, logical reasoning and seeing the essentials of the problem. ये चार सब qualities है RA के, उसके definition में ये लिखा हुआ है. वर्बैटिम है, मेरे को GTO मैं बोल रहा हूँ, मानो मेरी बात को, तोड़ो इस myth को. मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ, doesn't work in 21st century, sorry. Yeah. I want to add one more thing to Sachin's question. See, Sachin, practicing such
writing such good stories, it comes with a lot of practice and obviously knowledge, as Nikhil sir is saying that you should read newspaper and everything. So we have thought of all these things also, like how we can help you practice more and more into all these tasks, and how we can keep you aware of all these, current affairs, geopolitical issues and everything. So we have a solution for it. You just have to stay tuned with us by the till the end of this webinar. We have something to, something really surprising and something very different today. So stay tuned. I'll just take the next question. um Rohan is asking, sir, is it advisable to practice the psych test before your SSBs, or do you approach the tests naturally? Guys, if you can stick on to what I have said, तो ऐसे ही चले जाओ. और अगर थोड़ा बहुत अपना स्टार अलाइन होना चाहिए, बिकॉज चीज़ें मैच होनी चाहिए. इस वेबिनार पे नहीं कवर कर पाऊंगा मैं. टैट में क्या है, वैट में क्या है, एसआरटी में क्या है, एसजीटी में क्या है, वो नहीं हो पाएगा. सॉरी. एंड उसका कोरिलेशन कैसे हो रहा है. तो इफ यू हैव टू रियली परफॉर्म वेल, आई वुड एडवाइस कि राइट गाइडेंस होना चाहिए, राइट डायरेक्शन बताने वाला कोई होना चाहिए. उसके हिसाब से तुम्हारा ये माइंडसेट रीओरिएंट होना चाहिए, ताकि तुम्हारा मनसा वाचा करवाना सिंक करे व्हेन यू आर देयर फॉर द एसएसबी. सो 100% of it what you would say is not right, but exceptions can be there. I'm not saying that I'm the only exception, that I'm uh, I mean मेरे को एसएसबी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट स्टिल मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 है. अगला पोस्ट आएगा मेरे प्रोफाइल पे वेरी सून. या गाइस. Is asking that how can I improve my English? His SSB is in 1 month. Abhay, I'll take this question. Abhay, we have something for your English improvement also. Just stay tuned with us. I'll tell you about that as well. Um, should we go ahead and I can take these questions after a while? Yeah, we can do that. I think let's go. Yeah. Continue. Okay. अब इतने सारे वेबिनार्स किए, what have we realized? There are a lot of people, guys, ये बहुत सोच समझ के लिखा है मैंने. You guys are not aware of the basics of the SSB only. The reason for this is that there is a lot of myth and muck and kachra and garbage that is floating around on the internet with respect to the SSB. बहुत कचरा इधर उधर फ्लोट कर रहा है, which is not really right. उसकी वजह से तुम्हारे पास में सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है एसएसबी के बारे में. Second thing, one sad truth about the SSB is that because of this myths, misguidance है, you are not on the right path. 80% से ज्यादा लोग तो ऐसे ही स्क्रीन आउट हो जाते हैं स्टेज 1 में ही. वहीं के वहीं कहानी खत्म हो जाती है. मतलब कोई अच्छा स्टूडेंट भी होगा, बट क्योंकि मिसगाइडेंस है, बिकॉज ऑफ द गार्बेज दैट इज फ्लोटिंग अराउंड ऑन द इंटरनेट, गलत ट्रैक पे चला गया और वो स्क्रीन ही नहीं कर पाया. Dude, guys, I am telling you that this is all about your mindset preparation and reorientation. तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसएसबी इज नॉट जस्ट अ टेस्ट यार, कि जाके टेस्ट लिख दिया खत्म हो गया, पर्सनालिटी असेसमेंट है. दो फिटनेस है ना, दैट फिटनेस इज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट टुवर्ड्स द फोर्सेस है, उस चीज का चेक होता है एसएसबी में. ठीक है. ये ओवरऑल मनसा वाचा कर्मना कैसे सिंक होगा अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, जब सामने से गोलियां चलेंगी, बम फटेंगे, सीआईसीटी में भांड होंगे, और अगर मेरी तरह कहीं ओडी ऑपरेशंस में आ गए तो ठोक के दम पे जाओ, ठोक के भाव में जान दाव पे लगेगी तुम्हारी रोज ओडी ऑपरेशंस में, ऑयल फील्ड एक्सप्लोरेशन एरियाज. आई कैप्टन द वॉरशिप एंड द स्क्वाड्रन फॉर डिफेंडिंग ओडीएस ऑन द वेस्टर्न सीबोर्ड ऑफ द इंडिया. तो वहां पे वो माइंडसेट का अलाइनमेंट होना चाहिए एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल कंडीशंस में. उस चीज का मिनिएचराइज्ड वर्जन होता है एसएसबी. ठीक है गाइस. सो what do we do is, guys, we have a 15 days SSB hackathon program in which close to about 35 to 40 hours of learning happens, where we do mock psych tests,
and we give you feedback from a DIPR certified psychologist who's a part of my team. And then we do GTO theory and practices on all the tests and all the tasks of what happens. पता चले कि उसके बैकग्राउंड में असेसमेंट कैसे होता है, जीडी कैसे लेक्चरेट से कोरिलेटेड है, जीडी के बाद ही जीपी क्यू है, जीपी के बाद ही पीजीटी क्यू है, पहले पीजीटी क्यू नहीं है, क्या रीजन है, क्यों ऐसे करना है, आज से थोड़ी कर रहे हैं, 1907 से कर रहे हैं, 1947 से कर रहे हैं, आज तो 2023 है, फिर भी ऐसे ही कर रहे हैं, क्या रीजन, टाइम टेस्टेड प्रूवन मेथड है. And then we also carry out a personal interview from a DIPR certified interviewing officer. That's very, very critical. And we give you demonstration of each and every task. 3D models available है. Exactly बताते हैं ऐसा करोगे तो ये behavior manifestation से इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब वो होता है, ये करना है, ये minimum acceptable level है, ठीक है. And what happens is कि सपोज अगर आप एक बैच में आ गए, आपका बैच खत्म हो गया, फिर उसके बाद में भी यू वांट सम काइंड ऑफ अ हैंड होल्डिंग, देन यू कैन ऑलवेज कंटिन्यू टू सिट इन द फ्यूचर बैचेस एज वेल. मेरे स्टूडेंट्स पहले भी ये करते थे, आज भी ये करते हैं, ठीक है. सो वी टच बेस इनिशियली फर्स्ट ऑन द पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, वहां से स्टार्ट करते हैं. उसके बाद में कॉमन स्टोरीज कैसे बनती है, क्यों बनती है, कैसे बनाना पड़ता है, और यही क्यों करवाते हैं एसएसबी में, क्या रीजन है इसका. सो वी कैरी आउट न्यूमरस एक्सरसाइजेस एंड देन आपको समझ में आता है कि ये स्टार अलाइनमेंट क्या सीन है, कहाँ से शुरू होता है ये, क्यों कहाँ पे जाके खत्म होता है. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है एसएसबी को देखने की. दिस इज माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आफ्टर हैविंग मेड वन बोर्ड. व्हाट इज दिस सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, सीधा सीधा कट टू द पॉइंट चाहिए. फौज स्टार फंक्शन पे ही काम करती है. किसी भी यूनिट में चले जाओ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वेदर यू आर अ फाइटर पायलट, whether you are a navigating officer, whether you are a marine commando, whether you are a para commando, whether you are a Garud commando, or you are riding a tank, or whether you are a helicopter pilot, or you are doing logistics officer का ड्यूटी, कुछ भी कर लो, पूरी फौज सिर्फ स्टार फॉर्मेट पे चलती है. सिचुएशन क्या है, टास्क क्या है, एक्शन क्या है, रिजल्ट क्या चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ठीक है. And then we keep doing this repetitive exercises to improve your mental, verbal and non-verbal reasoning skills and abilities. Then एग्जैक्टली ये फिश मार्केट टाइप सिचुएशंस क्यों बनते हैं, कौन बनाता है, और ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करना होता है. दैट्स एग्जैक्टली वी टच बेस ऑन दैट, बिकॉज जीडी पीपीडीटी का भी हिस्सा है, जीडी का भी हिस्सा है, और जीपीई का भी हिस्सा है. एज मच एज ये इन तीनों इंडोर टास्क का हिस्सा है, ये उतना ही हिस्सा पीजीटी का भी है, हाफ ग्रुप टास्क का भी है, और फाइनल ग्रुप टास्क का भी है, क्योंकि वहां भी फिश मार्केट बनता है, वहां प्रैक्टिकली सॉल्व करना होता है. सो वील गो इनटू द डेप्थ, पीआईक्यू फॉर्म को कैसे भरना है. उसके बाद में वी ऑल्सो टच बेस ऑन द पीआईक्यू फॉर्म का कोरिलेशन विद द एंटायर साइक टेस्ट. तो साइक टेस्ट के चारों टेस्ट के साथ में फिर कोरोबोरेशन कैसे होता है बैकग्राउंड में, ठीक है. सो फाइनली ये असेसमेंट घूम फिर के आगे खत्म कैसे होता है कॉन्फ्रेंस पे, आई विल गिव यू एन इनसाइट अबाउट दैट एज वेल. ये 15 दिन में पूरा कवर हो जाता है, ठीक है. उसके बाद में ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में क्या लिखना होता है, कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्यों करवा रहे हैं एसडीटी, क्या फायदा है मेरे को, क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपसे. उसके बाद में इसका कोरिलेशन कैसे होगा पीआईक्यू फॉर्म के साथ में. ये लाइंग इंडेक्स की बात की थी ना मैंने अभी, दैट हाउ मच हैव यू फेक, तो वो कैसे पता चलता है. एंड देन दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, 3D मॉडल्स एंड ऑल. पीआईक्यू फॉर्म का भी बता दिया. पीआईक्यू फॉर्म को भरना एक आर्ट है, कला है. यू आर गिविंग आउट योर रेज्यूमे. नौकरी मांगने जाते हो कहीं पे, मैंने ये इंजीनियरिंग करी, वो इंजीनियरिंग करी, मेरे को नौकरी चाहिए, आई एम दिस, आई एम दैट, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट. दैट्स योर टेक्निकल स्किल सेट. पर्सनालिटी के बारे में एक्सप्लेन करना है अपनी, मैं क्या हूँ, तो वो रेज्यूमे तुम्हारा पीआईक्यू फॉर्म है. उसको भरने का तरीका है. जैसे अगर रेज्यूमे बनाने का एक तरीका है, तो पीआईक्यू फॉर्म भरने का भी एक तरीका है. सो बाद में इसका कोरिलेशन कैसे होता है पूरे चारों साइड टेस्ट के साथ में, बिकॉज पीआईक्यू का एक्सेस साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास होता है, जीटीओ के पास नहीं होता. तो कैसे कोरिलेशन होता है, पीआईक्यू से सीआईक्यूज कैसे फ्लो आउट होते हैं, योर कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन एयर जो एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर तुमसे पूछता है, ये सब चीजें हम तुम्हें सिखाते हैं, ठीक है. एंड ये सोशियोमेट्री, कौन कितना पानी में है, एक ग्रुप बिल्डिंग एंडेवर में कौन कहाँ तक पहुंचा फाइनली आफ्टर फाइनल ग्रुप टास्क,
उसको सोशियोमेट्री से कोरिलेट करना पड़ता है। जीटीओ का ये ब्रेड एंड बटर होता है। ये चीज बताऊंगा मैं तुम लोगों को मेरे कोर्स में, तब जाके तुमको क्लियर होगा कि सॉरी ऑन अ लाइटर नोट, मेरी भैंस कितनी पानी में है और मेरे को कितनी मेहनत करनी है। ठीक है। And that's this whole process is all about reorienting your mindset towards your SSB preparation journey. क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें जो है, इट इज ऑल अबाउट कचरा घुसा हुआ है इधर उधर। तो जो राइट कंटेंट नहीं पढ़ा है तो समझ में कैसे आएगा एग्जैक्टली एसएसबी होता कैसे है। ठीक है। I'll hand over to Commander Arun Mishra now, who is also there on the call. Sir, over to you, please. Thanks, Nikhil. Nikhil, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, great. Hi, kids. Before I dwell upon, what my role would be in this program and in your journey of preparation for SSB, a quick introduction from my side. I am Commander Mishra, and I am ex-NDA. And on completion of NDA, I was privileged and blessed to go through MTech program, IIT Kharagpur. And I also did MBA from IIM Indore. So I'm an alumnus of all three prestigious institute of India, NDA, IIT, and IIM. And for those who think that they will miss out on certain aspects of their aspirations, be aware that Armed Forces provides one of the best institutes in terms of your exposure and learning curve. So this is one area in which you will never ever miss out in case you join the forces. And while in Navy, I served for 23 years. And after Navy, one of the key organization that I joined was Dakshina Foundation. And Dakshina Foundation is an NGO which coaches underprivileged kids for JEE and NEET program. And I served Dakshina Foundation as Chief Academics and Chief Executive Officer for nearly 8 years. And in those 8 years, I coached more than 4,000 students. And I'm proud to say that of these 4,000 students, more than 70% of the kids, they joined one of the IITs or one of the government medical colleges. And it was a residential campus in Pune. And uh, it so happened that in a residential campus, we had 600 kids. And I have seen the journey of these children who are preparing for JEE. And to tell you the truth, any success for any competitive exam, which we're talking about just now in the webinar, comes through a lot of sacrifice and self-discipline. And when I used to be part of their journey while they were in the campus, I think one of the two key reasons which everybody was so proud of, and the reasons of their success, if I may say so, were two. Zero distraction. Those children who were in the campus, they were not allowed to keep any mobile phones. Their parents were not allowed to come to the campus. They were not allowed to leave the campus. And there were no holidays, no Sundays. In fact, even on Sundays, we had exams. And for 11 months that they were there with us in a campus, to tell you the truth, it was a hard journey. The journey was not easy one, but they knew that in case they follow the process, and in case they follow what the faculty says, in case they surrender to the process, and in case they have blind faith in the instructors, and in case they know that their faculty is there with them till the end of their journey, that faith and the purpose and the dream to outshine the others would result in an extraordinary result, in an extraordinary success after their efforts of 11 months. So Nikhil, when he brings out that he is a DIPR qualified faculty and assessor,
who has seen thousands and thousands of children going through under his hat, and he has ensured that more than around close to 16 students have been recommended in the recent past in a short span of coaching of less than a year. It goes on to say that he is one of the faculty who comes with enormous experience, and in case those students who follow his process, I am sure that success will happen one fine day. So I'm a firm believer is that in case we focus on the process, the daily habits, the daily life skills, if not SSB, let's say, you will come as a winner in any arena that you fight for. So this is one small thing I wanted to mention in this webinar, that our group of officers will stick to the process, which will ensure that you will come with the flying colors. Now, the second part which I want to just add on, which is an advisory, or which I plead to all of you, is one thing is to read. I plead to read, because when I see this generation, there's a global decline in real serious reading. And one of the major reason is the short attention span, which is perpetuated by digital era, which has led to a significant decline of critical and conscious reading, immersive and slow reading, literary reading. Most of the reading is non-strategic or non-goal oriented reading. When you say that you are reading on WhatsApp University, or when you're reading some random stuff here and there, that reading is not called as a reading. In fact, even audiobooks are not equivalent of reading, but a poor substitute for real reading. So my dear friends who are there in the webinar, I urge you to read for pleasure. You will identify with many psychological processes involved in reading. Motivation, frustration, pleasure, leisure. It could be meditative. A lot of imagination and mental imagery will be founded. Creativity, inspiration, and many such complex human, emotional responses you'll have to deal with. I mean, it gives you a lot of those inner inspiration when you read the real stuff. And in the process of real reading, you will widen your mental horizon and, of course, vocabulary too. So, reading skills and practices are the foundation for full participation in the economic or political or maybe communal and cultural life of contemporary society. If they say that, war happens when language fails. And if some of you who follow Warren Buffett, the richest person on this planet as we speak, his 80% of his day goes in only reading. One of his co-partners says that in my whole life, I have known no wise people over a broad subject area, who didn't read all the time. None, zero. So in summary, I just want to plead that you read. And when you read, you will get a lot of mental fortitude and inner strength to deal with various kinds of tools and various kinds of skills which are required for preparation of SSB. Okay. And of course, in this journey is not going to be an easy one. All these advices are very simple to hear, but they're difficult to practice. How to develop the mental fortitude and inner strength to overcome these daily anxieties, the daily fear and the tumultuous life that we go through every day. We don't have to really go far. If we just follow some of our scriptures and meditative practices every day, I'm sure that, we'll come out winner. But it comes with daily practice. It is not one, sermon that you hear from somewhere. It is not that you go on YouTube and suddenly get motivated. You start with huge inspiration and motivation. But what keeps you going every day is your daily discipline. And I think one of the things which I just want to sort of announce here, anybody who wants to join a program or who joins the program, you will find a life coach, a friend, a philosopher who will be hand-holding you in the entire journey of your preparation in SSB. And not only in SSB, SSB is of course one of the focus area of the group. Arun sir? Yes. Uh,
I can hear you. Nothing, sir. I thought we lost you. Yeah, I'll just try to explain it in a little easier way to everybody what we are doing. So guys, what we have done is we have added whoever is getting, is getting trained or getting the SSB ka coaching from Nikhil sir. We have made one more group where Arun sir will be, taking care of everybody who's joining us, where you will get, we know that we get a lot of questions कि हमारा English अच्छा नहीं है, how will we prepare? So we will have grammar को लेके exercises, we will have spoken English skills that will improve on your English skills. We will have live sessions every week where Commander Arun sir will, talk about current affairs. He will every day he will talk to you and he will motivate you to read newspaper, or he will also discuss the current affairs with you, so that, I mean, these are also some of the very very important skills which are important if you are preparing for your SSB or any, to say, these are very important skills. So that's why we have added one more group where we will be motivating you to improve on the other parts of your SSB journey, like your grammar, your English, your current affairs, and everything. And as Arun sir is saying, he will give you a one-to-one hand holding session. And obviously, there are many people who talk to me. I will also be there to, to talk to you and follow up with you with your journey. So I think we can hand it over to Nikhil sir. Right, Arun sir? All right. And Hello. I can hear you. क्या हाल है? And Hema, would you like to also mention about the feedback form at the end? Yeah. I will, guys, I will share a feedback form with everybody. You can, if you think that your question is not answered, or if you think that there is anything that you want to share with us, you can share it in that feedback form. I'll share it in the end. Okay. We can hand it over to Nikhil sir. He can continue. Thank you. Okay, guys. So this is the candidate equation which is followed at the services selection board or the Air Force selection board for your recommendation. What is the present level of the candidate? इसमें अगर मैं ट्रेनेबिलिटी फैक्टर को ऐड करूंगा तो ये एवरेज पोटेंशियल ऑफिसर बन सकता है क्या? मतलब इसको मेरे को ट्रेन करना है, कहाँ पे ट्रेनिंग लेनी है? नेशनल डिफेंस एकेडमी में, इंडियन नेवल एकेडमी में, या इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में? पायलट बनना है एयरफोर्स एकेडमी में. ओके, वेरी नाइस, गुड. यहाँ पे ट्रेनेबिलिटी है, आप में इस ट्रेनिंग को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है क्या? अगर ये है तो इसको मैं आपके प्रेजेंट लेवल से मिलाऊंगा, देखूंगा कि आप एवरेज पोटेंशियल ऑफिसर लेवल पे पहुंचते हो क्या. अंतिम पग पे पैर रखने के उस पार चले जाओगे तो ऑफिसर बन जाओगे. तो ये एवरेज पोटेंशियल ऑफिसर लेवल तक पहुंच सकते हो क्या? इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. वी हैव टू डिस्कस दिस इन डेप्थ एंड डिटेल. आई विल नॉट बी एबल टू कवर दिस एज अ पार्ट ऑफ द सेमिनार. इफ दिस LHS इज इक्वल टू RHS देन यू आर रिकमेंडेड. तो जब SSB जाते हो तो यू आर एडजज्ड on your present level. Your present level has to be greater than or equal to the minimum acceptable level, क्योंकि ये predefined है, right? सिंपल सी बात है. अगर minimum acceptable level जो है present level अगर उससे ज्यादा रहेगा, ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगा. So what do? We help you figure out the gap between your present level and your minimum acceptable level, and then we give you feedback so that you can improve on yourself as early as possible, irrespective of your written exams. AFCAT है, written exam पहले clear कर लेते हैं, उसके बाद में SSB का देखेंगे नहीं. जितना जल्द से जल्द पता चलेगा कि कहाँ पे गैप है, उतना ज्यादा अच्छा है, ताकि अल्टीमेट गोल तो है SSB में जाके रुकना है, उसका कॉल आना चाहिए. ओके, सी गाइस, ये CS जॉइंट सर्विसेज एकेडमी और इंटीग्रेटेड SSB वर्चुओसोस मैंने इसलिए स्टार्ट किया था बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर ट्रेन इंडियन आर्म फोर्सेस एस्पिरेंट्स ऑफ टुडे फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस ऑफ टुमारो, व्हिच इज गोना बी अ वेरी वेरी टेक सेवी फोर्स. तो
it's about bringing a change organizations, change the world, and change lives. So if you join us, then we'll not only train you for the SSB, but we'll also help you improve yourself on your spiritual level and your mental level and your social level as well. Okay. We'll work on your communication skills, your nervousness, and help you overcome the stage fear as well. All these exercises will eventually help you get better and better every day. Continuous improvement. It's a one big Kaizen. It's all about continuous improvement on daily basis throughout your SSB preparation journey so that the best version of you comes out when you're appearing for the SSB. And that's how we had quite a few success stories. But before I touch base there, let me take a few questions and then we can go to the next thing. Yeah. Yeah. So Vaishnavi is asking that we were talking about the myths. So what are these actually myths which are spread and which are there? Sorry, what's the myth? What are the myths that are spread about SSB? Myths कौन से क्या spread myth हैं जो एक तो बहुत बड़ा myth float कर रहा है, जीडी में सुनना नहीं पड़ता, सुनाना पड़ता है. I don't know why would somebody say this. क्यों बोलना है ये? जीडी में ना सुनना पड़ता है ना सुनाना पड़ता है. जीडी में बस ऐसे बात करनी होती है जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में ओवर अ कप ऑफ टी और कॉफी विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स जैसे आप बातचीत करते हो, सिर्फ वैसे बात करना होता है. एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करना होता है ताकि आप ग्रुप का लेवल बढ़ा सको, इफेक्टिव लेवल ऑफ फंक्शनिंग को बढ़ा सको. ये एक मिथ है. ऐसे तो बहुत सारे मिथ्स है. इलाहाबाद सेंटर एक रिजेक्शन सेंटर है. फौजियों के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है. रिपीटर्स का सिलेक्शन मुश्किल है. ऐसा कुछ नहीं है. एवरी एसएसबी इज अ न्यू एसएसबी. मेरे वेबसाइट पे जाके देखोगे isvclub.in पे, तो वहाँ पे एक बच्चे का नाम है सूर्यभान सिंह राठौर. 17th टाइम रिपीटर था वो. पहले एसएसबी से रिकमेंड हुआ, आर्मी गया, नेवी गया, आईएनए जाके उसको ठीक नहीं लगा, आर्मी की एसएसबी थी, आईएनए छोड़ा, आईएमए गया. नाउ इज अ कमीशन सर्विंग ऑफिसर इन दी आर्मी. 17 बार रिपीटर. नेक्स्ट. Next question is from Ankit. He's asking while writing TAT stories, is it compulsory to relate with PIQ? Talk about yourself, brother. If your PIQ doesn't talk about yourself, then what does it talk about? I want to know more about you as a person. That is my one Ramban ilaj, one Ramban Brahmastra hai. I want to know more about you. Who the hell are you? Why should I take you into the profession of arms? क्यों नौकरी दूंगा मैं तुम्हें? Why should I call you into the bloodbath business? Because I want to know more about you. How do I know more about you? Through your PIQ form. इसलिए PIQ form को भरना भी एक कला है. Next. I'm taking two questions, or both together. You can answer them together. One is I lose my concentration and I get diverted often. How could I improve it? And how can we take part enthusiastically in narration? In narration. मतलब खुद की स्टोरी लिखी हुई है, खुद को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो एंथुजियाज्म आ नहीं सकता. तो खुद की स्टोरी जो बिल्ड की है वो बहुत कॉन्फिडेंटली लिखी होगी तो एंथुजियाज्म अपने आप आएगा. दैट्स हाउ साइकोलॉजी वर्क्स. और अगर किसी का कंसंट्रेशन अगर टूट जाता है तो माय डियर फ्रेंड, आई वुड सजेस्ट यू टू मेडिटेट. सवेरे उठो, 5 मिनट से स्टार्ट करो, घंटे भर का मेडिटेशन तक पहुंचो, कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ेगा. नेक्स्ट. I would like to add onto these questions. One question was from anonymous attendee. The same question was from Avirup. So when we bring these batches, what we try to do is we try to streamline these things. We try to help you prepare and practice more and more, so that when you're actually standing on the SSB grounds, you are more confident than today. And we are going to tell you about that also in a while. So I'll take the next question. How to Okay, develop wait once again. I read this thing. Whosoever this guy anonymous attendee is, my dear friend, whosoever you are, that English is wrong. LOOSE loose का मतलब होता है ढीला. LOSE is the right word to be used here. Okay, next. all these grammar mistakes and everything also we take care of, like we told you in the group WhatsApp group that we have created. Next question is
I want a guidance. Vinay Kumar is saying many people say many different things. I want it's not a question. It's just he's saying that he needs a guidance because there are a lot of things that many people are saying. See, uh, guidance, guidance. I don't really understand how to speak about this in depth more. Guys, ये वेबिनार हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि you you get to know a glimpse of what right guidance is. I don't know if does that answer the question. Hema? We Yeah, can Nikhil. So, these questions are quite, I would say at this stage relevant. But my request to all those, these kids who have joined the program, a lot of things require structured training and a structured program. So I urge those students who really want to know the depth, in-depth concept, to join a program and learn in a better way. Hema, to you. Okay, I think we can go ahead and there are a lot of similar questions. I'll say that with the correct guidance and more practice and practice every day with a correct routine, disciplined routine, you guys will be able to, be more Okay, confident and Hema, let me answer this guidance and ये सब ना एक ही बार में. यार, this is your goal. गोल है एसएसबी में रेकमेंड होना है. एसएसबी एक फॉर्मेट में चलता है, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट. क्योंकि पूरी इंडियन आर्म फोर्सेस जो है ना वो इसी फॉर्मेट में चलती है. ठीक है. अब ये कैंडिडेट है, इसको इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना है, यहाँ पहुंचना है. दिस इज योर गाइडेंस. ये होता है इंटीग्रेटेड एसएसबी वर्चुओसोस में राइट गाइडेंस. बिकॉज हाउ मैटर्स मोर देन व्हाट एट एसएसबी. हम ये हाउ कैसे करते हैं ना, ये बताता है आईएसवी. I don't know if this answers the question. Let's move ahead. Hey guys. Oh, so this is the most interesting part now. Guidance की बात कर रहे थे. So, see guys, I'm starting my next batch from 20th of November, which is day after tomorrow, Monday. Generally we charge $10,000, 15-day SSB hackathon. 99% मिथ तो आपके ऐसे ही टूट जाएंगे एसएसबी को लेकर के. और क्या नहीं करना है ये तो बहुत पहले समझ में आएगा. सबसे पहले यही समझ में आएगा. और इनिशियल 3-4 दिन में ये पता चल जाएगा कि अरे मैंने एसएसबी में जाके ये किया था, ये गलती थी, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं हुई, या मैं स्क्रीन आउट हो गया था, मैं क्यों कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा हूँ बार बार. ये तो पहले 4-5 दिन में ही पता चल जाएगा. सो दिस इज द फीस. बट अगर कोई इनरोल कर रहा है तो we're making it 8,000 just for tonight. And the link for registration is going to be shared in the chat by Hema. She's going to share the link. Yeah, I'm going to put this registration link into one of the answers. You'll be able to see that link after that. Yeah, I've posted. Otherwise, I'll post that in the WhatsApp group also, or anybody who can reach out to me personally as well. Okay, guys. So, आज तक we've coached about a total of 59 students. And sorry, that's gibberish. Out of 59, we've got 15 recommendations. जिनमें से 16 recommendations, जिनमें से 13 are officers. One is in NDA right now. One has just joined OTA. इस बंदे का नाम है दर्शन कोटियान. You can check my live session with him on my personal Instagram handle, Darshan Kotian and me live. And one has just gotten recommended for SSC IT from NSB Vizag. ठीक है. सिर्फ 15 दिन के प्रोग्राम में खत्म कहानी. You're just there 15 days. So ये अभी तक की 16 स्टोरीज है हमारी.
close to about 27-28% सक्सेस रेट है. ठीक है, बहुत सोच समझ के कंटेंट को बनाया है एक बोर्ड बनाने के बाद में और 12 SSB में सर्व करने के बाद. बहुत सोच समझ के आई हैव मेड द कंटेंट. कंटेंट की दुनिया है ना, 21st सेंचुरी, जेन जी, जेन अल्फा, इंफॉर्मेशन इन योर फिंगर टिप्स, कंटेंट, एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट कंटेंट. तो ये जो कंटेंट है ना, जो हम लोग ISP में पढ़ाते हैं, यही हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. कैसे करना, जो करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसको सीखना जरूरी है. ये सिखाता है CS Joint Services Academy, my academy. The brand name is ISV. Hey guys, this guy, talking about this guy, Suryaban Singh Rathod, 17 बार, 17 times SSB, NDA से लेकर के ग्रेजुएशन तक 17 times. This guy came to me, found me on LinkedIn after my retirement. मेरे सेकेंड बैच का स्टूडेंट है ये. टुडे ही इज एन ऑफिसर, पैरा ब्रिगेड में है, इन EME और आई थिंक समवेयर. So many students. Yeah, so this is our contact details. You can always reach out to Hema, who's looking after the sales and marketing of the org. But tonight, it's not 10,000, it's 8,000. Reachable here on call and WhatsApp. And this is the number that I hold, which is on WhatsApp. Thank you so much for attending this webinar, guys. For the next workshop, stay tuned on ISV official handles and on my personal handle as well, personal Instagram handle. Yeah. One thing I'm sharing a feedback form with everybody of you because there are a lot of queries, there are a lot of things that you want to share. So we have created a form. You can share all your doubts and anything that you want to share with us. You have my number also, that's one thing, but please take some time out to share this form as well. And if there's any feedback, it will be really really helpful. It will just take 2-3 minutes of your time, but it will help us also a lot. And if we find any queries that need to be answered quickly, we will try to answer it for you in the next 2-3 days. I've shared the link I've just replied to one of the questions just to share the form. Okay guys, जाते आते एक चीज बताऊंगा. SSB को अगर एक सेंटेंस में समेटना है ना, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है. बहुत कन्विक्शन के साथ मैं बोल रहा हूँ, एक ही सेंटेंस में SSB का मतलब, कर्म वही करो जो करना ही फल लगे, क्योंकि कर्म ही धर्म. यही होता है SSB और यही होता है वर्दी. ये बिकाऊ नहीं है, कमाना पड़ता है. एंड द प्राइस इज स्वेट एंड ब्लड. Starts at the training academy and will be there for the rest of your life. Nikhil sir, I want to take one last question from Abhishek. He's saying that he is good in English, but he has a little bit of stammering problem. Will it affect his selection in SSB? What's the reason for stammering? ये figure out करो. अगर प्रेशर के अंदर आकर के बात कर रहा है, स्टैमर कर रहा है, तो इट्स द स्ट्रेस दैट इज अफेक्टिंग यू. बट देन अगर इनहेरेंटली मेडिकल इशू है, स्टैमर में तो स्टेज 1 में ही हट जाएगा. Abhishek, you can reach out to me once for this. We can talk about this and I can tell you. That's what I want to say. You have my number. It's on the screen. If there's a medical issue, then unfit for service. But if it is under stress, that can be handled and that can be trained. We can do that well at ISV. Okay. Okay, we can end this now then. Thanks everyone for joining this.